Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapters. Today we are going to start our chapter 7, which is about our clothes. तो इस chapter के अंदर हम पढ़ेंगे different topics about the clothes we wear. So without wasting any time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Our Clothes, and the topics which we will learn are importance of clothes, different clothes worn in different seasons, uniform, traditional outfits, leather items. Importance of clothes. We wear clothes to cover our bodies. हम clothes को wear करते हैं ताकि हम अपनी body को cover कर सकें. Clothes protect करते हैं हमें from heat, cold, rain and dust. They also protect us from insect bites. We look smart and decent in clothes. जब हम clothes wear करते हैं हम बहुत decent लगते हैं. वो हमें protect करते हैं from heat, cold, rain, dust, also from insect bites. Now, different clothes worn in different seasons. हम different seasons में different तरीके के clothes wear करते हैं. We wear clothes according to the weather or seasons. तो हम लोग जो भी clothes wear करते हैं वो हम अपने weather या फिर season के according करते हैं. जैसे हमारे पास है summer season. तो it is very hot during the summer season. Summer season में बहुत ज़्यादा hot weather होता है. So we like to wear कॉटन क्लोथ्स इन द समर. इसलिए हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दे आर लाइट एंड कीप अस कूल. वो लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के कपड़े होता है कॉटन, तो वो हमें बहुत अच्छा फील कराता है, कूल फील कराता है. कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट. वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस ड्राई. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है. एंड द क्लोथ्स दैट वी वियर इन समर आर फ्रॉक, शर्ट, we have t-shirt, we have shorts. And do you know we get silk from silkworms? हमें silk कहाँ से मिलता है? Silkworm से मिलता है. Next हमारे पास आता है winter season. Winter season we wear thick woolen clothes. Winter season में हम thick और woolen clothes पहनते हैं. ये जो clothes होते हैं वो हमारी body को warm रखते हैं in the winter. Such clothes protect us from cold. और ऐसे clothes हमें ठंड से protect करते हैं. We get wool from the hair of animals such as goats, yaks, camels and sheep. Rainy season. We wear our raincoat in the rainy season because we do not want to get wet in the rain. हम रेनकोट्स को पहनते हैं रेनी सीजन में ताकि बारिश की वजह से हम अपने कपड़ों को ना भिगा लें और हम बीमार ना पड़ जाएं. सो वी यूज अम्ब्रेलास वेयर वी गो आउटडोर्स. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स व्हेन इट रेन्स. हम गम बूट्स भी पहनते हैं जब बहुत ज्यादा रेन होता है. दे कीप अस ड्राई. यूनिफॉर्म क्या होती है? People who do the same kind of work wear a special kind of clothing called a uniform. जैसे ऐसे लोग जो सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे होते हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथिंग वेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म. We can know what work a person does by looking at his or her uniform. हम पीपल की यूनिफॉर्म को देख के जज कर सकते हैं कि वो क्या वर्क करता होगा. Here are some examples of people who wear special uniforms. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो लोग कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. जैसे चिल्ड्रन वियर करते हैं यूनिफॉर्म when they go to school. Each school has different uniform. हर स्कूल की अपनी डिफरेंट यूनिफॉर्म होती है. लाइक पुलिसमैन की यूनिफॉर्म ये होती है, आप इनको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पुलिसमैन है. नर्स को देख के आप पहचान सकते हो उनकी यूनिफॉर्म को देख के कि वो नर्स है. डॉक्टर को आप असेंबल कर सकते हो. फायर फाइटर को आप देख सकते हो, उसके यूनिफॉर्म से जज कर सकते हो कि वो क्या वर्क करता है. डू यू नो वी शुड वियर नीट, क्लीन एंड वेल आयरन यूनिफॉर्म्स टू स्कूल एवरी डे. हमें एकदम नीट, क्लीन और आयरन यूनिफॉर्म्स को पहन के स्कूल जाना चाहिए. दिस इज एन एक्टिविटी इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस. तो फर्स्ट इज पुलिसमैन, second doctor, third firefighter, then nurse, and then the last one is a pilot. So we will write here pilot. Now we will understand about traditional outfits. So people living in different places wear different types of dresses.
लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस वेयर करते हैं। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग दैट रिप्रेजेंट आवर कल्चर, एक टाइप ऑफ क्लोथिंग जो हमारा कल्चर बताता है, हमारा हेरिटेज बताता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल आउटफिट। फॉलोइंग आर पिक्चर्स ऑफ ड्रेसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे पंजाब के लोग इस तरीके की ड्रेसेस वेयर करते हैं, हरियाणा के लोग इस तरीके की ड्रेसेस वेयर करते हैं। दिस इज द क्लोथिंग ऑफ असम पीपल एंड दिस इज द क्लोथिंग ऑफ ओडिशा पीपल। Now, what are leather items? We got leather from skins of animal like camel, horses, buffaloes, crocodiles, snakes. लेदर को हम यूज करते हैं टू मेक मेनी आइटम्स, जैसे लेदर जैकेट्स होती हैं, लेदर शूज होते हैं, बेल्ट्स होती हैं एंड बैग्स होते हैं। दिस इज द बैग, शू, बेल्ट, जैकेट मेड अप ऑफ लेदर। दिस इज योर ग्रोसरी इन विच प्रोटेक्ट का मीन्स होता है टू कीप समबडी सेफ, टू डिफेंड समबडी। डिसेंट का मतलब होता है ऑफ अ गुड इनफ स्टैंडर्ड और क्वालिटी। Then we have special, which means for a particular purpose. Let's quickly review the chapter. We wear clothes to cover our bodies. We like to wear cotton clothes. We get cotton from cotton plant. These clothes keep our body warm in winter. We also wear gum boots when it rains. Let's do the exercise. First is tick the correct option. We get dash from the cotton plant. So we get cotton from the cotton plant. We wear raincoat in the dash season, rainy. We get dash from skin of animals, leather. We wear gum boots in the rainy season. Fill in the blanks. We get wool from sheep. We look smart and dash in clothes, decent. Cotton clothes dash the sweat from our body, absorb. These clothes keep our body warm in the winter. Next is match the following. Cotton, cotton plant, sweater, winter, umbrella, rain and t-shirt, summer. So students, this was your chapter about the clothes we wear in different seasons and occasions. I hope the chapter is clear to you. Do revise it again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.